Hello, I am Dr. Rashi Jasodani and we are going to continue with the chapter Microbes in Human Welfare. Now, we are going to study the use of microbes in production of the biogas, right? So, what is biogas? First of all, we need to understand what is biogas. So, biogas is a mixture of gases that is produced by the microbial activity that can be used as a fuel. तो बायोगैस को हम क्या करते हैं, वी यूज इट एज अ फ्यूल. क्यों उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं? बिकॉज बायोगैस इज इनफ्लेमेबल, right? So it can be used for the cooking purpose, for energy generation purpose, right? Now here we use the term gobar gas. For biogas we use the term gobar gas. Why? Because we are going to use the microbes which are present in the cattle dung, right? Therefore the term gobar gas is used for the biogas. Now which microorganisms are present in the cattle dung? Like in rural areas we find, along with the agriculture, animal husbandry is also carried out. Therefore there are many cattle in the rural areas like cow, buffalo. So all that cattle dung, gobar, is used for the production of the biogas. Now the cattle dung contains the bacteria which, like I'll give you the name. कौन से वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? तो मीथेनो बैक्टीरियम. ओके, ये मीथेनोजेंस का एक एग्जाम्पल है, राइट? तो मीथेनोजेंस मतलब कौन? द बैक्टीरिया दैट कैन डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रोड्यूस अ गैस कॉल्ड मीथेन, राइट? तो उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मीथेनोजेन. किस में प्रेजेंट होते हैं? तो मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द कैटल डंग, गोबर में प्रेजेंट होते हैं. Now how do these microorganisms reach the cattle dung? Because they are present in the rumen of the cattle. जैसे काउ, बफेलो, इन सब के rumen में वो प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो मीथेनोजेंस है वो क्यों प्रेजेंट होते हैं इन द rumen, इन द stomach of these herbivores? Because they digest, they help in the digestion of the cellulose. तो सेल्यूलोजिक मटेरियल, जैसे ये सारे herbivores है वो ग्रास एंड ऑल द अनकुक्ड थिंग्स दे कंज्यूम, राइट? सारे प्लांट प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करते हैं जो कि अनकुक्ड होते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर us like human beings. They cannot digest the cellulose, right? Because we do not have any ruminants. हमारे बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में कोई भी मीथेनोजेंस नहीं है, but they are present in the cattle intestine or stomach, right? So these ruminants or ज़्यादा हम specifically बोले तो methanogens, they are present in the rumen of this herbivores, और वहाँ से वो पहुँचते हैं into the dung of the cattle, and hence this cattle dung is used for the production of the biogas, right? Now this technology, ये जो बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी वो किसने डेवलप की थी? इट वाज डेवलप्ड बाय IARI एंड KVIC. ये अब्रीविएशंस हैं. IARI stands for Indian Agricultural Research Institute. KVIC stands for Khadi and Village Industrial Commission. Okay. Now let us look at the construction of the biogas plant. Now herein what we can see, दिस इज द डाइजेस्टर. अब ये जो डाइजेस्टर है वो क्या होता है? तो इट इज मेड अप ऑफ कंक्रीट. तो वो 10 to 15 फीट डीप उसको खोद के कंक्रीट से बनाया जाता है, राइट? इट्स लाइक अंडरग्राउंड टैंक. ओके, उसमें सब सेल्यूलोजिक मटेरियल फिल करते हैं. सेल्यूलोजिक मटेरियल मतलब क्या? एग्रीकल्चरल वेस्ट. एंड व्हाट इज एडेड अलोंग विद दैट? डंग प्लस वाटर. इसको हम बोलते हैं स्लरी. दिस इज कॉल्ड स्लरी बिकॉज ये थोड़ा कैसा होगा? इट वुड बी अ बिट लिक्विड, तो हम इसको बोलते हैं स्लरी. नाउ दिस स्लरी इज एडेड इन द डाइजेस्टर एंड इट इज अलाउड फॉर मेनी डेज टू so that these microorganisms would digest this cellulosic material. ठीक है, जो ये ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको डाइजेस्ट करते हैं ये मीथेनोजेंस. एंड देयर इज अ फ्लोटिंग टैंक, राइट? तो ये यहाँ पे जो फ्लोटिंग टैंक ये लोग लगाते हैं, ये जो फ्लोटिंग टैंक है वो क्या करेगा? वंस द गैस इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, दिस द फ्लोटिंग लिड is going to
फ्लोट मतलब गैस की वजह से क्या होगा, इट्स गोइंग टू कम अप एंड here in the gas holder, the gas would be collected in this holder and finally it would be emitted out for the further use. ये जो digested material है, ठीक है, बिकॉज द स्लरी कैन बी एडेड इन कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है द यूज्ड स्लरी दैट इज रिमूव्ड थ्रू दिस एक्सटीरियर टैंक और इसको बोलते हैं स्लज. What is this sludge going to help us in? This sludge is going to be used as manure. इसको कैसे यूज किया जाता है? As manure in the fields. ठीक है, तो fields में manures की तरह ये काम करेगा, right? So this was about the biogas plant. Next is microbes as biofertilizers. Now you might have heard the word fertilizer. Fertilizers are the chemicals that are used to enrich the soil. Soil में nutrients को replenish करने के लिए fertilizers are used, right? But herein we are going to discuss about biofertilizers. That means the microorganisms that enrich the nutrient quality of the soil. ठीक है, तो हम लोग ऐसे microbes के बारे में स्टडी करने वाले that are going to help in enriching the soil with the nutrients, right? Now there are many bacteria, fungi, cyanobacteria, many other microorganisms which are used as biofertilizers. We'll discuss a few those which are mentioned in our course text. Rhizobium. Rhizobium is the symbiotic microbe which is associated with the roots of the legumes, right? So rhizobium है वो एक symbiotic association बनाता है किसके साथ? तो legumes के roots के साथ. Okay, they are going to form the root nodules. In which way this rhizobium is going to help the plant? Rhizobium एक bacteria है and that has got the capacity, the capability to fix the nitrogen, atmospheric nitrogen into the soil. Okay, now in the air, okay, in the air we find nitrogen. जो molecular nitrogen है वो कितना present होता है? तो it's around 78%. अब इतना सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है in the air, but plants cannot take them directly because it is present in the bound form. ये insoluble form है. That means it is not absorbed by the plants directly, even though if it is present in air in so much of amount. ठीक है, तो इतना सारा नाइट्रोजन होने के बाद भी plants are not able to absorb the nitrogen. Therefore, the nitrogen has to be present in the soluble form. It has to be converted into the soluble form so that plants can absorb it. This is done by many ways. ठीक है, it could be naturally by thundering. It could be by the addition of various fertilizers. ठीक है, chemical fertilizers and होते हैं. Then naturally it is done by many ways actually. मैं अभी chemical fertilizer का भी बोल गई बीच में. Now see children, rhizobium bacteria, they are having this capacity to make this insoluble form of nitrogen into soluble form so that plants can take it. And the plants can there are various plants like wheat जिनको की बहुत ज़्यादा nitrogen requirement होता है, right? So if we spread the chemical fertilizers तो क्या problem होती है? The soil becomes saline. These days we are already facing so much of problems with the pollution. तो ये chemical fertilizers भी pollution ही spread करते हैं, right? They will make the soil saline and finally the soil might convert into desert, right? तो इसलिए biofertilizers are the need of the hour. आजकल biofertilizers बहुत use होते हैं. Next is Azotobacter and Azospirillum. Now these bacteria also fix the nitrogen. जैसे rhizobium का हमने nitrogen fixation, ये specific है legumes के लिए. ठीक है, ये symbiotic association बनाते हैं legumes के roots के साथ. Azotobacter and Azospirillum है, ये free living bacteria है. These are free living bacteria, मतलब
ये किसी के साथ ऐसे एसोसिएशन नहीं बनाते हैं, एंड देयरफॉर एंड उनका काम वही है, दे आल्सो फिक्स नाइट्रोजन इन दी सॉइल. तो these bacteria are usually used as biofertilizers. Okay, they are already being used these days. फिर mycorrhiza. Now mycorrhiza में specifically Glomus species की mycorrhiza, मतलब हम एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स. माइको फंजाई की बात कर रहे हैं हम, और राइजा रूट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ग्लोमस स्पीशीज की फंजाई it get associated with the roots of many angiosperms, and because of that it helps in the absorption of phosphorus. ठीक है, तो ये phosphorus absorption में help करते हैं. As you know that phosphorus is also one of the important nutrient which plants require for the proper growth and development. Therefore mycorrhiza are also used these days as the biofertilizer. ये naturally होता था, but these days we try to grow the fungi and try to spread it like the chemical fertilizer into the fields, so that it gets associated with the crops and finally it enriches the, even it is spread in the soil, and these some of the microorganisms can get associated with the plants, or they can just live in the soil and enrich the soil with different nutrients, right? Then comes cyanobacteria like Nostoc, Anabaena, और एक हम लोग नाम लिख लेंगे Oscillatoria. Okay, this bacteria you might have also seen in microscope. These bacteria, they also fix the nitrogen in the soil, and in specifically in the paddy fields, right? And few cyanobacteria, they add in the organic matter to the soil, and hence increase the organic matter, and hence enrich the fertility of the soil. Okay, so this was about the biofertilizers. See, many a times what happens, these say for example association of fungus with the roots, इसमें they not only help in absorption, जैसे इस केस में phosphorus है, there could be many other examples. Now along with the enrichment with the nutrients, these fungal or microbial associations, they help in the resistance to the pathogens. क्योंकि ये बैक्टीरिया अगर अटैच होते हैं रूट्स के साथ, तो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कोई और पैथोजन है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता है प्लांट को. समटाइम्स दे बिकम वेरी मच रेजिस्टेंट टू द सॉइल सैलिनिटी. ओके, दे बिकम ड्रॉट रेजिस्टेंट, क्योंकि इवन अगर पानी कम होगा स्टिल these microorganisms would help the plants to absorb the soil through their filamentous structures. ठीक है, then as I told you that biofertilizers are already being used these days as the option, as the good substitute to the this chemical fertilizers. Okay, so this was about the biofertilizers. In the next session we are going to discuss about the microbes as biocontrol agents. Okay, thank you.